गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइजिंग पब्लिक डेट ऑफ स्टेट्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सीएजी ने एक डेकेडल रिपोर्ट निकाली है फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट्स की, जिसमें देखने को मिला है कि शार्प इंक्रीज हुआ है पब्लिक डेट में स्टेट्स की, और उसकी वजह से फिजिकल सस्टेनेबिलिटी पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पब्लिक डेट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अपनी रेवेन्यू से जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से उन्हें बोरोइंग करनी पड़ती है, चाहे डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल मार्केट से। तो पब्लिक डेट जो है सभी तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, जो कि कंसोलिडेटेड फंड से फाइनेंस होती हैं। इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है पब्लिक डेट, ठीक है। तो डेट टू जीडीपी जो रेशियो होती है, और स्टेट्स के केस में डेट टू क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो जो होती है, वो एक क्रिटिकल मैट्रिक होता है कंट्री की जो है डेट को असेस करने का। हायर रेशियो सिग्नल करती है कि ग्रेटर फिजिकल रिस्क है, लोअर रेशियो सजेस्ट करती है ग्रेटर स्टेबिलिटी है, कैपेसिटी टू हैंडल डेट है। और ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर होता है फिजिकल मैनेजमेंट का। एन के सिंह की जो कमेटी है, उन्होंने प्रपोज किया था कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 40% सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, 20% स्टेट्स की होनी चाहिए। मतलब कंबाइंड जनरल गवर्नमेंट डेट जो है वो डेट टू जीडीपी रेशियो 60% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो टोटल डेट जो है वो 59.6 लाख करोड़ रुपीज़ पहुंच चुका है 2022-23 का, ठीक है। और जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है वो 22.96% पहुंच चुकी है, जो कि ज़्यादा है 20% से। तो स्टेट्स का जो डेट है 22.17% है इंडिया के जीडीपी का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेट है स्टेट्स पर वो हैं पंजाब, नागालैंड और वेस्ट बंगाल। सबसे कम जो डेट है इंडिया में स्टेट्स के ऊपर वो हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो 8 स्टेट्स जो हैं उनकी पब्लिक डेट लाइबिलिटी 30% से ज़्यादा की है। 6 स्टेट्स हैं जिनकी पब्लिक डेट लाइबिलिटी 20% से कम की है, ओके। तो अगर हम देखें पब्लिक डेट जो स्टेट्स का है वो लगभग 150% रहा है उनके रेवेन्यू रिसीट्स का या टोटल नॉन डेट रिसीट्स का, ठीक है। तो डेट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं। लेकिन बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं, खासकर पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, जो अपनी बोरोइंग्स अपने करंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए लगा रही हैं। अपनी सैलरीज देने के लिए भी उनको डेट लेना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश ने सिर्फ 17% और पंजाब ने सिर्फ 26% जो है बोरोइंग्स अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सीएजी फ्लैग्स फ्रॉड इन स्टेट स्कीम्स। ये टॉपिक भी आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीएजी ने रिवील किया है कि एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ करते हुए उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट्स किए, और कई फ्रॉडुलेंट केसेस उन्हें स्टेट की बेनिफिशियरी स्कीम्स में एक्सपोज किए हैं। तो सीएजी जो है वो एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहा है फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, और इसकी वजह से जो है वो रिमोट ऑडिट्स कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर हैसल्स कम हो रही हैं, टाइमली रिपोर्टिंग हो रही है, और कवरेज भी एक्सपैंड हो रही है ऑडिट की। तो टूल्स जो हैं ये स्टेट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेव करने में। जैसे कि कुछ टूल्स यहाँ पर मेंशन भी किए गए हैं, जैसे IFMIS है। ये डिजिटल वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ यूज़ करती हैं ऑटोमेट करने के लिए कई तरह के फाइनेंशियल फंक्शंस को। फिर वैमिस है जो डिजिटल सिस्टम है मैनेज करने के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को। कैपनिक है जो कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को जो है वो ऑटोमेट करता है। फिर ये आपका जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कंप्यूटराइज, डिजिटाइज और मॉडर्नाइज करता है सभी लैंड रिकॉर्ड्स को। सीएजी जो है वो जो है इन रिमोट ऑडिट्स को कर रहा है, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, ई प्रोक्योरमेंट वर्क्स, डीबीटी स्कीम्स को ऑडिट करने के लिए। और अब ज़रूरत है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी ऐसे ही ऑडिट किया जाए। तो इसलिए कहा जा रहा है स्टेट्स को कि वो कॉन्टिन्यूसली अडॉप्ट करें, इंटीग्रेट करें एडवांस डिजिटल टूल्स को, ताकि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स को अपने वो इंटीग्रेट कर सकें इन टूल्स के साथ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आइसोब्यूटेनॉल डीजल ब्लेंडिंग। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है एक्सप्लोर कर रहा है आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ ब्लेंड करने के लिए एज एन ऑल्टरनेटिव टू एथेनॉल। तो गवर्नमेंट जो है वो अपना अटेंशन शिफ्ट कर चुकी है आइसोब्यूटेनॉल की तरफ। आइसोब्यूटेनॉल एक 4 कार्बन अल्कोहल है जो कि सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है कई इंडस्ट्रीज़ में, जैसे पेंट्स और केमिकल्स। ये लेस वॉलेटाइल होता है, सेफ़र होता है एथेनॉल के कंपैरिजन में, इसलिए फायर रिस्क भी कम होते हैं। आइसोब्यूटेनॉल जो है वो ब्लेंड ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है डीजल के साथ, और इथेनॉल की तरह इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है शुगर केन सिरप, मोलासेस और ग्रेन्स के थ्रू। इथेनॉल को क्यों नहीं ब्लेंड किया गया डीजल के साथ? क्योंकि इसका लो फ्लैश पॉइंट होता है, तो फायर रिस्क ज़्यादा होता है। कंपेटेबिलिटी भी इसकी अच्छी नहीं है केमिकल एडिटिव्स के साथ, ठीक है, जो डीजल के हैं। इंजन के ऊपर भी कंसर्न्स हैं
ठीक है, कम्बस्शन इरेगुलरिटीज़ रहती हैं डीजल इंजन में। तो आइसोब्यूटेनॉल एक तरह से प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव है डीजल ब्लेंडिंग का। अब आइसोब्यूटेनॉल की प्रोडक्शन जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस की तरह होती है जैसे एथेनॉल की होती है, लेकिन स्पेशली इंजीनियर्ड माइक्रोब जो है उनको कन्वर्ट किया जा सकता है नेचुरल शुगर्स में इनटू नेचुरल शुगर्स को आइसोब्यूटेनॉल में। तो एक ऐसी शुगर रिफाइनरी जिसमें 150 किलो लीटर्स पर डे की कैपेसिटी है, वो 125 के एल पी डी एथेनॉल बना सकता है, 20 के एल पी डी आइसोब्यूटेनॉल बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं H1B वीज़ा। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाइट हाउस ने इंट्रोड्यूस किया है $1 लाख की एंट्री फ़ी H1B वीज़ा होल्डर्स की सितंबर 21 से, जिसकी वजह से कंसर्न रेज हो रहे हैं इंडियन टेक वर्कर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर। तो कोई भी H1B पिटीशन अब से जो है आउटसाइड द यूएस जो है वो नहीं अप्रूव की जाएगी जब तक स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर $1 लाख अपफ्रंट नहीं पे करेगा। तो ये फीस अप्लाई होगी H1B पिटीशंस पर फॉर वर्कर्स हु आर वर्किंग आउटसाइड द यूएस। तो सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के पास लेकिन एक डिस्क्रिप्शन दे दी गई है कि वो वेवर दे सकते हैं उन इंडिविजुअल्स, कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ को जो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में है। तो ये मेजर जो है वो 12 महीने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में कहा गया है कि इसको एजेंसीज रिव्यू करेंगी। अब इसमें ये क्लैरिफाई नहीं किया गया कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाई होंगे वेवर्स के लिए। ठीक है, पर देखा गया है मोस्टली कि हेल्थ केयर, डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए हिस्टोरिकली यूएस प्रायोरिटाइज करता है। तो एम्बिग्यूटी है इसमें कि क्या यूनिवर्सिटीज़ और नॉन प्रॉफिट्स को भी ट्रीटमेंट सही मिलेगा या नहीं। तो इमिग्रेशन एक तरह से डिविसिव इशू बन चुका है यूएस पॉलिटिक्स का। इकोनॉमिक एंग्जाइटी है, रेशियल अंडरटोन्स हैं, और वो इमिग्रेंट्स को ऐसा ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो वर्किंग क्लास वहाँ के उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो नेटिविस्ट जो रिपब्लिकन्स हैं वो कह रहे हैं इंडियन वर्कर्स जो हैं वो अमेरिकन जॉब स्टील कर रहे हैं। ठीक है, H1B वीज़ाज जो कि टॉप टैलेंट के लिए एप्लीकेबल होता है या बनाया गया है, वो टेक फर्म्स यूज़ कर रही हैं मिडिल लेवल स्टाफ वर्कर्स को भी चीपर सैलरीज पर रखने के लिए। लेकिन इंडस्ट्रियल लीडर्स क्या कह रहे हैं कि H1B वीज़ा एसेंशियल है अमेरिका के स्किल गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि चाइना और इंडिया जो है वो फार मोर स्टेम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं दैन यूएस। इंडिया जो लार्जेस्ट यूज़र है H1B सिस्टम का, उसको सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिस्रप्शन देखने को मिलेगा। इंडिया के आईटी सर्विसेज और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क अब ऑफशोर हब्स पर शिफ्ट करेंगे, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे। ओके, तो इंडियन मेजर्स जो कि H1Bs पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी ऑन साइट डिलीवरी के लिए, उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा इसका। अब स्मॉलर फार्म्स जो हैं ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगी इसके लिए। ठीक है, बट इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये बिग टेक फार्म्स हैं वो अब इंडिया की तरफ जो है वो रिक्रूटमेंट करना शुरू करेंगी लोकली। ओके, बिकॉज यूएस में उनको ये मैसिव जो है कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च किया है, जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस द इंडिया स्ट्रेंथन करना चाहता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है ये, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विमेन के हेल्थ को एनहेंस करना, फैमिली वेलबींग को प्रमोट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसके लिए जो हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ, मल्टी प्लेटफॉर्म आउटरीच होगा अवेयरनेस के लिए, वॉलंटियर और निक्षय मित्र भी जो है एंगेज किए जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने 4.88 किलोमीटर का टनल ब्रेक थ्रू अचीव किया है थाने क्रीक में यूजिंग न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ये जो मेथड है इसमें जियोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है सराउंडिंग रॉक मास का, उसको यूज़ किया जाता है स्टेबलाइज करने के लिए टनल को। तो ये मेथड यूज़ करता है स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग सॉइल ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल में, और ये ऑपरेशन सिक्वेंशली किया जाता है ताकि ग्राउंड कंडीशंस के एडवांटेज ली जा सके। तो ये शॉर्ट रेंज जो टनल्स होती है उनके लिए सबसे बेस्ट सूटेड है। थाने क्रीक क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रीक्स है एशिया का, कोस्ट ऑफ मुंबई पर ये लोकेटेड है। अरेबियन सी के का इनलेट है। यहाँ पर थाने क्रीक फ्लेमिंगो बर्ड सेंचुरी भी है, जो कि एक रामसर साइट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप फास्ट पेट्रोल वेसल अदम्य को कमीशन किया गया है। अदम्य का मीनिंग क्या है? इनडोमिटेबल। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। डिस्प्लेस करता है 320 टन्स और लगभग 28 नॉट्स तक की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज अमोघ फ्यूरी। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी ने एक मेजर इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज की है अमोघ फ्यूरी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज जिसको कि सप्त शक्ति कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में।
राजस्थान के थार डेजर्ट में। तो कॉम्बैट पावर टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज की गई है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is rising public debt of states. This topic is important for your governance section. So CAG has released first of its kind decadal report on the fiscal health of states, highlighting a sharp increase in public debt and implications for fiscal sustainability. So public debt arises when the government expenditure exceeds its revenue from taxes and other sources, necessitating borrowing from domestic and international markets. So in essence, public debt includes all liabilities of the government funded through the Consolidated Fund of India and Consolidated Fund of State. So this debt is categorized into internal and external components. Okay, so debt to GDP or GSDP ratio are the critical metric to analyze the country's ability to service its debt. Okay, so higher ratio of course signals greater financial risk, while a lower ratio suggests greater stability and capacity to handle debt. It is also important to ensure prudent fiscal management through this ratio. So NK Singh committee has recommended that 40% for the central government and 20% of the states for the states should be the debt to GDP ratio, which so therefore a combined general government debt to GDP ratio should be not more than 60%. But total debt has swelled to 59.6 lakh crore rupees for the states, and this is basically 22.96%, which is higher from 20% that is recommended by an NK Singh committee. So states debt now about equals to about 22% of India's GDP, where the states like Punjab, Nagaland, West Bengal, they are far ahead of the recommended debt ratio. In fact, Punjab is double the recommended debt ratio. The lowest ratios are coming from Odisha, Maharashtra, and Gujarat. They are fiscally prudent states. So eight states have a public debt liability of more than 30%. 6 states have a public debt liability of less than 20%. Okay. So on an average, public debt of the states has been about 150% of their revenue receipts and total debt receipts. So debt should finance capital expenditure, not the revenue expenditure. But 11 states, including Punjab, Andhra, West Bengal, they are using the borrowings to finance their current expenditure, including the payment of salaries. So Andhra Pradesh spent only 17% and Punjab spent 26% of its borrowings on capital expenditure. Okay. So the next topic is CAG flags fraud in state schemes. This topic is again important for your governance section. CAG has revealed that AI and machine learning based forensic audits have exposed numerous fraudulent cases in states' beneficiary schemes. So CAG has emphasized that growing role of AI and ML in detecting fraud is important, so as to enable remote audits, reduce hassles for executives, ensure timely reporting, and expand coverage. These tools could save states significant financial resources. So, what are these tools here? So, IFMIS, which is a digital web-based platform used by government entities to automate and integrate various financial functions. Then we have VAMIS, which is a comprehensive digital system for managing construction projects. Then we have GEPNIC, which is a software system that conducts all stages of government procurement process. E-voucher systems are there. Then land records modernization program is there to computerize, digitize, and modernize all land records. So CAG has been successfully able to conduct remote audits in areas like GST, stamp and registration, e-procurement works, DBT schemes, and now there is a need to focus on urban local bodies and Panchayati Raj institutions audit also. Okay, so states must continuously adopt and integrate advanced digital tools into their public financial management frameworks. So the next topic is isobutanol diesel blending. This topic is important for your science and tech section. India is exploring isobutanol diesel blending as an alternative to ethanol, and the government has turned therefore its attention to isobutanol instead of ethanol for diesel blending. So isobutanol is a 4-carbon alcohol which is widely used as a solvent in industries like paints and chemicals. It has a high flash point. It is less volatile and safer than ethanol, therefore lower fire risks are there. It has better mixability with diesel. Uh, it blends more effectively with diesel. Like ethanol, it can be produced from sugarcane syrup, molasses, and grains through microbial fermentation. So why ethanol blending is not done with diesel? So ethanol blending with diesel faced several hurdles, like ethanol had
low flash point, which increased volatility and fire risk. Uh, it required chemical additives to stabilize the blend, so there was poor compatibility issue also. Blending caused ignition and combustion irregularities in diesel engines, so therefore concerns for engine also were there. So isobutanol emerged as a promising alternative for diesel blending. Isobutanol follows a similar process that, for of a fermentation as ethanol, and with specially engineered microbes, they can convert natural sugars into isobutanol. So kind of you can say that a sugar refinery with 150 klpd capacity can produce 125 klpd ethanol and 20 klpd isobutanol with minor infrastructure modifications. So the next topic is H-1B visa. This topic is important for your international relations. So White House has introduced a $1 lakh entry fee for H1B visa holders starting 21st September. This has caused concerns among Indian tech workers and students. So no H-1B petition for workers outside the US will be approved unless the sponsoring employer pays $1 lakh upfront. So this fee applies to all H-1B petitions for workers outside the US. Secretary of Homeland Security may waive the restriction for individuals, companies, or industries if they are deemed in the US national interest. This measure will last for 12 months, after which the agencies will review it. The proclamation does not clarify which sectors may qualify for waivers, though areas like healthcare, defense, and critical technology have historically been prioritized. It also leaves ambiguity over the treatment of universities and non-profits. Immigration has become one of the most divisive issues in U.S. politics. This narrative is rooted in economic anxiety and racial undertones, whereby immigrants are portrayed as displacing the struggling working class of the US. So nativist Republicans arguing that Indian workers are stealing American jobs and lowering wages, because they're saying that H-1B visas, which are meant for top talent, they are used by tech firms to hire mid-level staff at cheaper salaries. Industry leaders counter that H-1B visa are essential to fill America's skill gap, because data shows that China and India produce far more STEM graduates than the US. India, which is the largest user of the H-1B system, will face greatest disruption. Uh, India's IT service firms and global capability centers, which have staff rotations to the US, uh, this will become expensive for them. So they will shift more project work to offshore hubs like Bangalore, Hyderabad, and Pune. Indian majors will be, which depend on H-1Bs for on-site delivery, will face a problem, and smaller firms will be the most vulnerable one amongst them. So the next topic is Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan. This topic is important for your governance and social issues. PM Modi has launched this Swasth Nari Sashakt Parivar program, and the aim is to strengthen healthcare services for women and children across India, and to focus on improving access, quality care, and awareness for them. So this initiative is by the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Women and Child Development. It encourages active participation from private hospitals and healthcare professionals. The aim is to enhance women's health, promote family well-being, and through nationwide health camps with real-time monitoring, the implementation will be done. Multi-platform outreach for awareness will be there. Volunteer and Nikshay Mitra engagement will be there. Okay. So the next topic is new Austrian tunneling method. This topic is important for your science and tech section. So Mumbai Ahmedabad bullet train project has recently achieved a 4.88 kilometer tunnel breakthrough under the Thane Creek using a new Austrian tunneling method. This method was developed in Austria to use the geological stress of the surrounding rock mass to stabilize the tunnel itself. This method uses the strength of the surrounding soil to the greatest extent possible. The operation occurs sequentially to take most advantage of the ground conditions. It is best suited for short range tunnels in regions with variable soil conditions. So, what is Thane Creek? It is one of the largest creeks in Asia, and it is located partly on the coast of Mumbai metropolis. It's an inlet along the shoreline of the Arabian Sea. It has a bird sanctuary called Thane Creek Flamingo Bird Sanctuary. It was designed as a Ramsar site in 2022. So the next topic is Adamya fast patrol vessel. This topic is important for your security section. Recently, Indian Coast Guard ship fast patrol vessels Adamya was commissioned. It means indomitable. It is designed and built indigenously by Goa Shipyard Limited, and it has displacement capacity of approximately 320 tons, and it can attain a maximum speed of 28 knots. The next topic is exercise Amog Fury. This topic is important for your security section. Indian Army has conducted a major integrated firepower exercise
exercise Amok Fury, which has been conducted by the Saptashakti Command of the Indian Army, and it has been conducted at the Mahajan field firing ranges of Rajasthan's Thar Desert. The drill is aimed to test combat power, coordination, and operational readiness of the armed forces. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.